Good morning, my dear students. Welcome to my YouTube channel Khanwal Physics. So आज आम गोटे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक ऊपर डिस्कशन करने को जाऊे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. So what is total internal reflection? तो अनेक प्रश्नर गोटे उत्तर डायमंड कहीं चकचक करे आमर डेजर्ट रे कौन पाई मिरेज हुए मरीचिका आमर पोलार रीजन रे कौन पाई लूमिंग हुए एमिति अनेक प्रश्नर गोटे उत्तर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो आस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उपरे हमें अनेक कथा डिस्कशन करिबा. एई फेनोमेनन उपरे डिटेल डिस्कशन परे याकू रिलेटेड लो लेवल ठू आरंभ करिके नीट लेवल रो जेई लेवल रो मेन आउ एडवांस लेवल रो प्रॉब्लम पर्यंत आमे सॉल्व करिबा. हे पारे गोटे किबा दुईटा वीडियो हमको करिबा को पड़िबो. आसो डिस्कशन करिबा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. सो व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? सो लास्ट वीडियो को जदि आमे टिके जिबा तो लास्ट वीडियो को दया करिके देखि कि एई वीडियो को देखिबो. काहेकि ना लास्ट वीडियो रे आमे डिस्कशन करिथिले रिफ्रैक्शन रो सेकंड वीडियो रे आमे डिस्कशन करिथिले जदि सपोज एटा होचे हमरो रेयर मीडियम, सपोज दिस इज डेंसर मीडियम. जेते बेले लाइट रेयर मीडियम रो डेंसर मीडियम आड़ को रिफ्रैक्शन हुए जेते बेले सी मीडियम को चेंज करे सेते बेले हमरो रिफ्रैक्शन हुए. जदि रेयर मीडियम रो डेंसर मीडियम आड़ को जदि हमरो रे आसुथिबो ताहले रिफ्रैक्शन हे सरला परे दी इंसिडेंट रे विल बी डेविएटेड टुवर्ड्स द नॉर्मल. दैट मींस ए केस रे जदि एटा हबो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये जदि हबो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ताहले एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये दिला हमरा प्रथम केस. सेकंड केस रे हमें प्रमाण करिथिले जे जदि हमर रे डेंसर मीडियम रो जदि रेयर मीडियम आड़ को जाउथिबो जदि डेंसर मीडियम रो जदि रेयर मीडियम आड़ को जदि हमर रे ट्रैवल करूथिबो ताहले एंगल ऑफ इंसिडेंस हला आई ताहले द रिफ्रैक्टेड रे विल बी डेविएटेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ए सिचुएशन रे योर आर विल बी ग्रेटर देन आई. योर आर विल बी ग्रेटर देन आई. The ray will be deviated away from the normal. Okay? ए दीटा सिचुएशन को हमें टिके आखि आगे रखिबा. पर्टिकुलरली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को बुझिबा पई हमें सेकंड केस को हमें आखि आगे रखिबा. देखो कौन होउची. सो व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? ना रु तो टिके टिके जणा पडुची. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोध हुए रिफ्लेक्शन किछि हेबा को रिफ्रैक्शन चैप्टर रे बोध हुए रिफ्लेक्शन किछि गोटे हेबा को जाउची और टोटल इंटेंसिटी बोध हुए रिफ्लेक्शन हबो सेथि पय याको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोली कहा जाए. तो ए जिंस को जदि हमें आखि आगे रखी कि डिस्कशन को आगो को बढ़ाइबा. सो आई एम कंसीडरिंग an interface. So this is the interface. Suppose x and y. मु गोटे काम करूची एठी गोटे नॉर्मल टाणुची. एटा हो गोटे नॉर्मल. This is my second normal on the interface. This is my third normal at the interface. And this is fourth normal at the interface. गोटे काम करिबा हमें. Okay. Suppose this is point of incidence O1, this point of incidence O2, and this is point of incidence O3, this is point of incidence O4. So चारिटा हम incident ray consider करिबा at four normals. Suppose this is my N1, N2, N3, and N4. गोटे source of light एठी नेबा. This is my source of light S. Okay. So light is incident first at the first point of incidence. तो जते बेले लाइट आसी के एठी इंसिडेंट करिवो सेति के बेले रिफ्रैक्टेड रे will be deviated away from the normal. Will be deviated away from the normal because this is my denser medium. Sorry, this is my denser medium and this is my rarer medium. Because light is traveling from denser to rarer medium.
That's the reason for which the refracted ray is deviated away from the normal. Okay, normal to दूर को देखो deviate ହେଇଛି ଏଇଠି ବି ଦେଖ same situation ଯେତେବେଳେ ray of light travels from rarer medium to denser medium to rarer medium, the refracted ray will be deviated away from the normal. तो जदि आमे second incident ray को consider करिबा, second incident ray भाई diagram को टिके भलो रे देखो. Now this is my second angle, second incident ray, and this is the corresponding angle of incidence. This is the angle of incidence, suppose I1. This is the angle of refraction R2. Sorry, R1. R1. This is I2. एठी आहुरी डेविएट करि जिवो अधिका काहे कि ना proportionately I बढ़ी बढ़ी गले हमर R भी बढ़ी बढ़ी जीव. स्नेल्स लॉ अनुसारे हमें जानिचे जे you see स्नेल्स लॉ हमको कोन कहूची. So sin I divided by sin R is a constant quantity, which is the refractive index of the second medium with respect to first. So it is a constant quantity. Relative refractive index of a particular medium with respect to second medium is a constant quantity. So sin I by sin R is equal to constant quantity. जदि I बढ़िबो ताहले R भी proportionately बढ़िबो. तो जेहेतु I वर्तमान हमर बढ़ी बढ़ी जाउची तो R भी बढ़ी बढ़ी जीवो. तो डेफिनेटली ए जो R2 हम देखुचे, this R2 is greater than R1. देखो R1 to R2 डाउरी अधिक अछि. ताहले हमें जदि एंगल ऑफ इंसिडेंस को फर्दर बढ़ेबा, एमती बढ़ई 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 जदि चलीबा, गोटे पर्टिकुलर सिचुएशन रे कोन हेबा को जाउची देखो. एमती जते बेले बढ़ी 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 जीवा देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस आहुरी बढ़ी जाईची. सो दिस इज माय थर्ड इंसिडेंट रे. सोर्स रो आउ गोटे रे थर्ड रे जाईची, एठी आसी के पड़ीची O3 रे. एठी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गोटे स्पेशल एंगल. ए एंगल ऑफ इंसिडेंस I3 को हमें ना रखिबा C critical angle बोलिया को कहा जाए, for which the refracted ray is a parallel to the interface. ता माने एठी देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन टा 90 डिग्री टू कम थिला, एठी टिके आउ टिके बढ़िला, एठी एग्जैक्टली देखो 90 डिग्री ही गला. 90 डिग्री. It is a special case. It is a special case. So it is a special angle of incidence for which the angle of refraction is 90 degree. देखो 90 degree. It's a special point of incidence. It is a special angle of incidence. It is a special refracted ray. Okay, which is parallel to the boundary, parallel to the refracting surface, parallel to the interface. तापरे जदि फर्दर आमे बढ़ेबा एंगल ऑफ इंसिडेंस को जदि आउरी फर्दर बढ़ेबा ताहले कोन हबो टिके चिंता करो तमे निजे. टिके थिंक ओवर द सिचुएशन. देखो जते बेले क्रिटिकल एंगल राशि की रे इंसिडेंट हला सते के बेले एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हला. देखो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ी बढ़ी जाउचे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ी बढ़ी जाउचे, तापर आउ कोन हबो. It will be reflected back to the denser medium. It will be reflected back to the denser medium. So देखो this is my angle of incident ray. This is my angle of incidence. Suppose I4 which is greater than the critical angle. Critical angle to देखो अधिक जते बेले हे जीवो रिफ्रैक्शन आउ हबनी, रिफ्रैक्शन न हे की रिफ्लेक्शन हबो. ए फेनोमेनन को कहा जाए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR. ताहले आमे याकू नोट करके रखिबा, इंपोर्टेंट पॉइंट्स नोट करके रखिबा. प्रथम आमे क्रिटिकल एंगल कोन आमे कहिबा. व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? यू टेल मी. क्रिटिकल एंगल. critical angle. So critical angle को देखो इधर कौन था? What is this? Critical angle is the angle of incidence.
Critical angle is the angle of incidence in the denser medium, for which the angle of refraction in the rarer medium is 90 degree. So now let us define. So it is the it is the angle of incidence in the denser medium for which the angle of refraction in the rarer medium is 90 degree. So this is the critical angle, which is generally represented by C or theta C. C or theta C, whatever the representation may be, it is the definition. So critical angle is the angle of incidence in the denser medium, for which the angle of refraction in the rarer medium is 90 degree. That means your refracted ray coincides with the interface, moves parallel to the interface. ओके जदि क्रिटिकल एंगल टू अधिका एंगल रे जदि आमे गोटे रे इंसिडेंट करेबा ताले इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक टू द सेम मीडियम फ्रॉम व्हिच इट वाज कमिंग ताले रिफ्रैक्शन बदल रे रिफ्लेक्शन हबो याको कहा जाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कोन पई ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रे 100% ऑफ लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक टू द सेम मीडियम जेते बेले हमरा रिफ्लेक्शन हुए मिरर्स रे किमा रिफ्रैक्शन हुए लेंसेस रे आगु को पढिबा हमें लेंसेस रे रिफ्रैक्शन हे कि जो इमेज फॉर्मेशन हबो मिरर्स रे रिफ्लेक्शन हे कि जो हमर इमेज फॉर्मेशन हबो सेही इमेज रो जति की ब्राइटनेस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन हबो यार ब्राइटनेस का बहु मात्रा रे अधिका बिकॉज़ 100% ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक किंतु मिरर रे जो हमरा रिफ्लेक्शन हुए 100% रिफ्लेक्शन हुए नहीं पार्ट ऑफ लाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द मीडियम रिफ्रैक्शन भी जेते हमर लेंसेस रे हबो सेटे मध्ये पार्ट ऑफ एनर्जी carried by the light will be absorbed. That's why the brightness is less in comparison to the image formed in case of your total internal reflection. Clear all of you? Total internal reflection रे 100% of light जत्ते की intensity of light आसीबो total energy or the total intensity of light will be reflected back. That's why the brightness of the image formed by the total internal reflection is more. Okay? So next do chamra, what is the total internal reflection? So it is a phenomenon. So total internal reflection is a phenomenon by virtue of which a ray traveling from denser to rarer medium is reflected back to the same medium. That means denser medium को फेरी क्या आसीबो reflected back to the same medium. Denser ru जाउतला denser को फेरी क्या आसीबो reflected back to the same medium if it is incident at an angle greater than critical angle. So this is the phenomenon. This is an interesting phenomenon exhibited by light
when light travels from denser to rarer medium, and it happens when the angle of incidence is greater than critical angle. Okay, so total internal reflection is a phenomenon by virtue of which a ray traveling from denser to rarer medium is reflected back to the same medium, माने same denser medium को फेरी के आसीबो if it is incident at an angle greater than the critical angle. So this is the definition. तो आर मैथमेटिकल जिनिस को हमें टच करिबा ताले फर्स्ट पॉइंट हमें नोट करिबा कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को कंडीशन रे हबो दुईटा कंडीशन सैटिस्फाई करबा को पड़िबो नंबर 1 कंडीशन होची लाइट शुड pass or travel from denser to rarer medium. Light should travel from denser to rarer medium. This is the first criteria. जदि light rarer ru denser medium को गति करिवो total internal reflection बिल्कुल हबनी. Think over it. काहे कि हबनी टिके भाबो काहे कि ना लाइट जदि रेयर मीडियम रो डेंसर मीडियम आड़ को जीवो ताले रे तो नॉर्मल आड़ को आसीबो ताले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हेबार चांस ही नहीं. सो लाइट शुड पास और ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम. दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया. माने जदि एग्जांपल देबा हमरो जदि नेबा हमें ग्लास टू एयर को गले भी हबो तमरो ग्लास टू वाटर को गले भी हबो. ओके किंबा वाटर टू एयर को गले भी हमरो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हे परिबो. ग्लास इज कंपैरेटिवली डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू एयर. ग्लास इज डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू एयर. ग्लास इज डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर. वाटर इज डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू एयर. जदि ए सब होची हमरो डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एपटर जहा अछि ताले ग्लास रु जदि एयर को जीवो हमरो रे ताले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हे परिबो. ग्लास रु वाटर को गले मध्ये हे परिबो. वाटर रु एयर को गले मध्ये हे परिबो. सो ओके ए तीनटा सिचुएशन और अनेक सिचुएशन हमर अछि. मु एग्जांपल तुमको देली तीनटा किंतु रिवर्स इज नॉट पॉसिबल. जदि एयर रु ग्लास को जीवो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हबो नाही. वाटर रु जदि ग्लास को जीवो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हबो नाही. एयर रु जदि वाटर को जीवो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हबो नाही. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया. एंड सेकंड क्राइटेरिया इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. द एंगल ऑफ इंसिडेंस must be greater than critical angle. Between the two media. Because ये जो critical angle आगु को हम देखिबा को जाउचे critical angle इटा गोटे constant quantity नहीं. हमरा दुईटा मीडियम जदि कंसीडर करिबा हैला ताले C will be constant. किंतु मीडियम जदि चेंज हैला C मध्य चेंज होबो. C is constant for a pair of media. For a pair of media the C is constant. जदि ए दुईटा मीडियम जदि चेंज हो जाए ताले C मध्य चेंज होबो. आगु को देखिबा. ओके लेट मी इरेज दिस पोर्शन. Okay. Now we will derive a small formula for critical angle. So now using Snell's law for at this point of incidence O3. Snell's law at
the point of incidence O3 as a use kariba. Suppose you see this is the denser medium, let its refractive index be mu d. This is my rarer medium, let the absolute refractive index of the rarer medium be mu r. Clear? ताहले मते कहि परिबो स्नेल्स लॉ को हम लिखिबा. सो स्नेल्स लॉ लिखिबार सबठो इजिएस्ट वे होची जोठिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लिखिबा सेठिर हम कोन लिखिबा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस. देखो पॉइंट O3 रे एंगल ऑफ इंसिडेंस केते अछि हमर c अछि. c is equal to mu r सेकंड मीडियम को जिबा mu r sin of सेठिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. सेठिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन केते 90 डिग्री. केना में भलो रे जानि छे ए फार्मूला को टिके मने पकाओ. mu1 sin I is equal to mu2 sin r. ए फार्मूला को हमें यूज करू छे. Okay, that means you see this is sin I divided by sin r is equal to mu2 by mu1. ये थिला हमर स्नेल्स लॉ. ओके, किंतु ए वे रे लिखिबा होची सबठो इजीएस्ट वे. कहीं ना एठी तमरो टिके कंफ्यूजन नहीं पारे, किंतु एठी बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं. जोठिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखिबो सेहिथिर साइन ऑफ एंगल लिखिबो. ताल देखो साइन म्यू डी. देखो डेंसर मीडियम रो हम रेयर मीडियम आड़ को जाउचे. फर्स्ट मीडियम होचे हमर डेंसर मीडियम. इंसिडेंट रे हमर डेंसर मीडियम रे अछि और रिफ्रैक्टेड रे हमर रेयर मीडियम रे तो नहीं. वर्तमान इंटरफेस रे पैरेलल हो जाई छै. इंटरफेस को पैरेलल हो जाई छै तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाई छै 90 डिग्री. सो दिस इज द इक्वेशन. आपको देखि के आपको लिखो. सो दिस इंप्लाइज sin c is equal to mu r divided by mu d. sin 90 becomes 1. sin 90 becomes 1. आपको हमें लिखि परिबा दिस इंप्लाइज you see. तो sin c will be equal to or c is equal to, you can say this is c is equal to sin inverse of mu r divided by mu d. एमती भी लिखि परिबा. और एल्स हमें जनरली कौन करूचे डेंसर मीडियम रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू रेयर मीडियम लिखा जाए. ताल देखो हमें एटा जानि छे तो mu21 is equal to 1 divided by mu12. प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी हमें प्रीवियस वीडियो रे डिस्कशन करी छे. तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट is equal to reciprocal of relative refractive index of 1 with respect to 2. ताले आपको हमें एमती लिखि परिबा. So this implies c will be equal to sin inverse of 1 divided by mu d divided by mu r, or this implies c is equal to जदि for instance जदि हमर रेयर मीडियम टा को हमें एयर किंबा फ्री स्पेस बोली कंसीडर करिबा तार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जदि हमें 1 बोली मानिबा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को 1 बोली मानिबा ताहले sin इनवर्स ऑफ 1 डिवाइड बाय आको म्यू बोली लिखि परिबा. दिस इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम हे जीवो विथ रेस्पेक्ट टू एयर. सो दिस इज द formula. You can say, you see, this is the denser medium with respect to rarer medium. So this is the absolute refractive index of the denser medium with respect to rarer medium. जदि rarer medium टा हमरो free space हेता है, rarer medium टा जदि free space हेता है, ताले C will be equal to your sin inverse 1 divided by mu of the denser medium. That becomes the absolute refractive index of the denser medium. जदि रेयर मीडियम टा हमरो एयर किंबा फ्री स्पेस हे गला ताहले एटा को हमें कहिबा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम. क्लियर. सो दिस इज द फार्मूला, प्लीज कीप इन माइंड. ताले 8 हमको जणा पडुची दे आको एमति लिखि परिबा sin c is equal to 1 divided by mu
ए फॉर्म रे जदि लिखि कि रखिबा ताले c is inversely proportional to mu. c is inversely proportional to mu. जो मीडियम रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जते अधिका हबो तार क्रिटिकल एंगल ता सेते कम हबो. ओके अच्छा या ऊपर आमे गोटे गोटे पॉइंट डिस्कशन करबा को जाउछे. देखो मु एठी तुमको तीनटा केसेस कहूची. सी सपोज फर्स्ट केस को हमें नेबा ग्लास आउ एयर रो कॉम्बिनेशन. ग्लास एयर रो कॉम्बिनेशन माने मोर एटा ग्लास थिबो, डेंसर मीडियम ता ग्लास थिबो आउ रेयर मीडियम ता जदी एयर थिबो ताले व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल ता पई गोटा हमें वैल्यू बाहर करबा. तो हमें समस्त जानि छे वी नो mu absolute refractive index of glass is equal to 3/2 and absolute refractive index of air is considered to be approximately 1. vacuum पाई किंबा free space पाई exactly 1 किंतु air पाई मध्य approximately 1. ताहले फार्मूला को टिके देखि कि हमें एटी बाहर करिबा. तो sin c will be equal to 1 divided by you see 1 divided by refractive index of denser divided by refractive index of rarer. तो refractive index of denser क्या है 3/2 divided by 1 so is equal to 2/3. It's 2/3. ताले c will be equal to sin inverse of 2/3 which is nothing but c is approximately equal to 42 degree. Now remember for all times to come, critical angle for the pair of media glass and air is 42 degree. 42 degree. এই যে critical angle টা হচ্ছে 42 degree. এই critical angle হচ্ছে 42 degree. তাহলে যদি এটা গ্লাস হইতিবো ডেন্সর মিডিয়ামটা যদি আমরা গ্লাস হইতিবো আর রেয়ার মিডিয়ামটা যদি এয়ার হইতিবো তাহলে এইটি যদি আমি গোটে রে ইনসিডেন্ট করাইবা ডেন্সর মিডিয়াম রে যার কি ভ্যালু 42 ডিগ্রি হইতিবো approximately 42 degree hittibo tahale angle of refraction will be 90 degree ଆଉ 42 degree to jodi adhika angle re jodi amaro incident kala light tahale total internal reflection heijibo refraction badalare reflection habo. So this is the situation in case of a glass air combination. Second jiba ame water au air ro combination. तो water air combination रे we know mu of water is equal to 4 divided by 3 and mu of air is equal to approximately 1. Okay, ताले critical angle c will be equal to sin inverse directly mu substitute करूचे sin inverse of 3/4 हबो कि नहीं 3/4 just like this you see 1 divided by 4/3. So 4/3 becomes 3/4. So here the critical angle will be approximately 49 degree. Approximately 49 degree. So remember this value for all times to come. ता माने एटा जदि डेंसर मीडियम हमरो वाटर थिबो रेयर मीडियम जदि एयर थिबो ताले 49 डिग्री रे जदि हमें गोटे रे को इंसिडेंट करेबा the angle of refraction in the denser medium will be 90 degree. 49 degree रो जदि अधिका angle रे incident करिबो water रे ताले total internal reflection will take place. ताले combination नेबा जदि आमे glass आ water रो जदि combination नेबा glass आ water रो combination जदि नेबा आमे निजे निजे करो इटा. So absolute refractive index of glass is equal to 3/2 and absolute refractive index of water is equal to 4/3. Then sin c will be equal to 1 divided by you see mu d it is a denser medium होचे हमर के 3/2 whole divided by mu r के हमर mu r होचे रेयर medium होचे water हमर 4/3. Okay, so is equal to 1 divided by 9 divided by 8. So this implies sin c is equal to 8 divided by 9. So this implies c is equal to sin inverse of
8 divided by 9 which is approximately C ର value होची 63 degree. You see ता माने ए जो डिफरेंस ता प्लीज कीप इन माइंड देखो ए जो ग्लास आउ एयर रो जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भीतर डिफरेंस ता जते अधिक थिबो माने रेयर मीडियम अपेक्षा डेंसर मीडियम रो ऑप्टिकल डेंसनेस माने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ता जते अधिक थिबो क्रिटिकल एंगल ता सेते कम हबो देखो ये डिफरेंस को हला कमिला क्रिटिकल एंगल बढ़िला ओके आउरी देखो डिफरेंस ता आउरी कमी गला देखो ये जो डिफरेंस ता देखो आउरी कमी गला कमी जेबा देखो क्रिटिकल एंगल ता आउरी बढ़ी गला ओके तो रेयर मीडियम रो तुलना रे डेंसर मीडियम रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ता जते अधिक हबो क्रिटिकल एंगल ता सेते कम हबो क्रिटिकल एंगल सेते कम हबो देखो ये बढ़िला ये आउरी बढ़िला सो दिस इज ऑल अबाउट तो आकु नै कि हमर किछि डिस्कशन आगो को बढ़ेबा जिते मु इरेज करुच्ची वीडियो को टिके फॉरवर्ड कर दियो ओके सो नोट सो नोट नंबर 1 रे मु ऑलरेडी जोटा तुमको कहि सारलिनी रिफ्रैक्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हेबा पई the light should pass from denser medium to rarer medium तीनटा केस हम देखिले वर्तमान तीनटा जाक केस रे डेंसर मीडियम रु रेयर मीडियम मार को जदी हमरा रे जीवो ताहले जाई कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हबो किंबा रेयर मीडियम रु जदी डेंसर मीडियम को लाइट आसुतिबो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बिल्कुल हबनी एटा होछ मोर फर्स्ट केस फर्स्ट नोट सेकंड नोट होची मोर सेकंड नोट होची जदी हमरा क्रिटिकल एंगल टू कम एंगल रे जदी हमरो लाइट इंसिडेंट करिवो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हबनी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हेबा पई द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल जोटा मैं ऑलरेडी लिखि सारछि सेट में आउ लिखुनी मो सो नंबर 2 केस मोर एटा नंबर 3 रे यू सी म्यू आमे गोटे रिलेशन टिके मने पकेबा स्नेल्स लॉ टिके मने पकेबा sin i by sin r is equal to mu 2 1 is equal to mu 2 by mu 1 is equal to v1 by v2 is equal to lambda 1 divided by lambda 2 मोर प्रीवियस वीडियो को देखो ए जो फार्मूला को मु डिराइव करिछि सो दिस इज द रेशियो ऑफ sin of angle of incidence to the sin of angle of refraction. This is the relative refractive index of the second medium with respect to first, which is equal to the ratio of absolute refractive index of the second medium to the absolute refractive index of the first medium, which is equal to velocity of light in the first medium to the velocity of light in the second medium, and is equal to ratio of wavelength of light in the first medium to the wavelength of light in the second medium. ये सब कथा हमें जानी चाहिए तो एटू गोटे कथा हमें देखिबा आपको जदि हमें देखिबा sin c we know sin c is equal to 1 by mu जस्ट डिराइव कले हमें sin c is equal to 1 by mu ताहले एटू टिके ए जो दीटा इक्वेशन को तुम जदि भलो भाबरे नजर पकेबो यू सी mu2 is inversely proportional to v जोठी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक आथिबो सेठी वेलोसिटी कोन हबो कम हबो वेवलेंथ मध्य कम हबो जोठी हमर कम थिबो जदि mu कम थिबो ताल वेलोसिटी अधिक हबो wavelength भी अधिक हबो inversely proportional you see inversely proportional that means mu इटु हमें क्लियरली देखि परिबा mu is inversely proportional to 1 by v or mu is inversely proportional to v and mu is also inversely proportional to lambda एट देखि परछ तमे क्लियर ए दीटा जाका हम कंक्लूजन हमको मिलुछ किंतु एठो मिलुछि जे c is inversely proportional to mu C is inversely proportional to mu बोली हमको जाना पड़ुछि ओके तो जते बेले हमरो C बढ़िबो
ता अर्थ म्यू कमिबो माने म्यू जदी कम अछि ताले सी अधिका हबो म्यू जदी अधिका अछि सी कम हबो ओके एतिक रिलेशनशिप को हम जदी मने रखिबा ताहले एठी सी ए दिटा को जदी कंपेयर करिबा सी एटा कोन हिजबो 1/c हिजबो ता अर्थ c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v critical angle is directly proportional to v जोठी वेलोसिटी अधिका ताले क्रिटिकल एंगल टा सेही पेज पई अधिका हबो एंड ताहले c is directly proportional also lambda clear to all of you so एठी गोटे कंक्लूजन हमको मिलुची so ए दुईटा इक्वेशन को जदी हम कंपेयर करिबा दिस इज आवर कंक्लूजन ओके तापरे आकु बेस करिकी हमें देखो किछि एग्जांपल्स मु तुमको एग्जांपल्स मने कर आमे गोटे एमतिका गोटे सिचुएशन कंसीडर करिबा एमतिका गोटे सिचुएशन कंसीडर करिबा देखो नेक्स्ट देखो गोटे राइट एंगल्ड आइसोस्केलेस प्रिज्म कंसीडर करिबा जाको कुहा जाए पोरो प्रिज्म ओके तो दिस इज 90 डिग्री दिस इज 45 डिग्री दिस इज आल्सो 45 डिग्री जदि गोटे रे को आमे नॉर्मली एटी इंसिडेंट करेबा आ एटा सपोज ग्लास रे तयारी हिची एंड योर सराउंडिंग मीडियम इज सपोज एयर तले व्हाट विल हैपन देखो कोन होची तो जदि नॉर्मल इंसिडेंस रे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी देखो हबो 0 पूरा स्ट्रेट पड़ी जिवो तापरे जतबे आसी कि एटे इंसिडेंट करिवो दिस इज द नॉर्मल तो एटा 45 डिग्री हला दिस इज 90 दिस इज आल्सो 45 डिग्री सो एंगल ऑफ इंसिडेंस मध्ये देखो हे गला 45 डिग्री आ जस्ट टिके पूर्व हम देखिले ग्लास एयर कॉम्बिनेशन रो क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री थिला तमरे 42 डिग्री टू जदी अधिका एंगल रे इंसिडेंट हबो रे the ray will be reflected back to the same medium देखो ग्लास भितरे हमर जाई कि एई राड को जाउथला किंतु एटे कोन आइ जिवो टी आई आर हे जिवो कोन पई बिकॉज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री व्हिच इज ग्रेटर देन 42 डिग्री 42 डिग्री इज द critical angle is 42 डिग्री फॉर ग्लास एयर कॉम्बिनेशन ताले रे कोन हबो रिफ्लेक्ट हेकि आसीबो जतबे रिफ्लेक्ट हेकि आसीबो रिफ्लेक्शन रो नियम को मानिबो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जदी 45 डिग्री हबो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 डिग्री हेकि आसीबो तापरे देखो एई जो सरफेस रासी की रेटा पड़िबो एटा हला फर्स्ट सरफेस रे रिफ्रैक्शन हला सेकंड सरफेस रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हला थर्ड सरफेस रे देखो नॉर्मल इंसिडेंस हेछि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 व्हिच इज लेस देन 42 यू नो नॉर्मल इंसिडेंस रे कोन हबो रिफ्रैक्शन विल बी in such a way that angle of refraction will be also equal to 0 ताहले कोन हला देखो केतिकी डेविएशन हला ए जो रे जाउथिला देखो ए दिगरे इंसिडेंट रेटा ए दिगरे जाउथिला केतिकी डेविएट हला एतिकी डेविएट हला दिस इज डेल्टा इज इक्वल टू 90 डिग्री डेविएशन हे जाए 90 डिग्री डेविएशन हे जाए तेनु करबा को पेरिस्कोप परिका व्यवहार करा जाए पेरिस्कोप ओके डेविएशन बाय 90 डिग्री सेकंड सिचुएशन को हमें देखिबा देखो यू सी सेकंड सिचुएशन सपोज दिस इज द केस तो एमती रखिबा ओके सो दिस इज द पोरोप्रिज्म योर आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल 45 डिग्री this is 45 डिग्री this is also 45 डिग्री गोटे रे को मु कोन करबी जस्ट एठी नॉर्मल इंसिडेंस करबी व्हाट विल हैपन आको टिके वीडियो को पॉज करके ड्रॉ द कोर्स ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द रे निजे करो देखो एठी नॉर्मल इंसिडेंस हला तो नॉर्मल इंसिडेंस हला माने दिस इज मेड ऑफ ग्लास यू नो दिस इज मेड ऑफ ग्लास
whose critical angle is with respect to air is 42 degree we know ताले कोन हबो normal incidence रे पूरा straight जाई के पड़िबो so this is my normal to this surface okay ताले इठी देखो angle 45 degree हबो कि नहीं 45 degree तो grazing angle वाला 45 degree तो angle of incidence भी हिजबो 45 degree which is greater than your critical angle to देखो अधिक आला ताले इठी कोन हबो TIR so total internal reflection will take place if the angle of incidence is greater than your critical angle ताले इठी reflection हबो reflection है कि पुणी इठी आसी कि पड़िबो ताले angle of reflection will be also 45 degree तो इठी जदि हमें पुणी normal टाणीबा you see this will be 90 degree कहीं ना ए दीटा सरफेस भीतर एंगल होची 90 डिग्री तन करी एटू जदी नॉर्मल टाइम दिस विल बी आल्सो 90 डिग्री तो एटा 45 जदी हबो एटे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस मध्य देखो 45 डिग्री अगेन इट इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल ताले आउथरे पूर्ण टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हबो एटी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है कि पूर्ण रिफ्लेक्ट करिवो लाइक दिस so this is again 45 degree तापरे थर्ड सरफेस रे आसी कि नॉर्मल इंसिडेंस हो जोटा कि हमर फर्स्ट सरफेस थिला सेटा ही हमर थर्ड सरफेस हेबे इटा नॉर्मल इंसिडेंस हला परे the ray will be come back like this is the refracted ray for this surface ताले रे जो दिगरे जाइथिला सेही दिगरे ही फेरिला तो डेविएशन डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री तो गोटे रे को हमें 180 डिग्री भी डेविएट करि परिबा बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बाय यूजिंग आवर पोरो प्रिज्म सो नेक्स्ट केस हम जदी देखिबा ओके नेक्स्ट केस रे देखो सपोज लाइक दिस देखो जदी हमें एमती कंसीडर करिबा देखो एमती नेबा गोटे रे ओके सपोज एटी गोटे ऑब्जेक्ट अछि एटी गोटे ऑब्जेक्ट एमती अछि सपोज गोटे ऑब्जेक्ट एमती अछि दिस द ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट रो एटू टॉप रो माने एरो हेड रो गोटे रे को बाहर कली ए जो एई अनुसारे एमती रिफ्लेक्शन है कि चलीबो एमती रिफ्लेक्शन है कि फेरिबो आउ गोटे रे को जदी मु कंसीडर करबी देखो एटू बाहरिबो एठी जाई कि पड़िबो पुणी एमती जीवो पुणी एमती फेरिबो ओके सॉरी देखो ए रेटा टिके भलो भाबरे मार्क करो कोन हला व्हाट हैपेंड देखो एठू रे प्रथम रे जाइतिला एपटे देई के आसिला तनो ए पॉइंट रो इमेज ता देखो एटी फॉर्मेशन हबो ए पॉइंट रो जो बेस रो जो पॉइंट रे जाइतिला ये रिफ्लेक्शन हेई कि आसी कि एटी पहुंचिला ओके तो देखो एटा कोन हेई छी पूरा उल्टा हेई छी तो ऑब्जेक्ट को हमें उल्टे परिबा माने जदी गोटे ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड हिगिर अछि ताको हमें इरेक्ट करि परिबा देखो एटा को जदी मु टिके जस्ट ट्विस्ट कर देबी लाइक दिस जदी एमती ट्विस्ट कर देबी ताले डायग्राम ता वर्तमान कोन हिजबो तमर टिके भाबी परुछो तमे ताले एटा जदी तमर इन्वर्टेड थिबो ये इरेक्ट हिजबो जदी इन्वर्टेड थिबो इरेक्ट हिजबो ओके सो देखो एठे इन्वर्टेड जदी गोटे ऑब्जेक्ट अछि जदी ऑब्जेक्ट गोटे एमती इन्वर्टेड हे कि अछि एमती रे चलिबो एमती रे आसीबो एटू एमती रे चलिबो एमती रे आसीबो एमती आसीबो तो दी inverted image the object will be erected aku erect kari paribo tame by using the poro prism okay so there are so many applications of total internal reflection video bodhuwe bahut lamba halani okay tenu kari mo au video ko lamboni tomaro desert रे जो हमरो कोन हुए हमरो मिरेज हुए हमरो पोलर रीजन रे लूमिंग भी हुए एथि पई भी हुए टिके जदि तमे जानिबा को चाहुछ ता ऊपर टिके मो आलोचना कर दे परिबी देखो डेजर्ट रे कोन हुए तो डेजर्ट रे हमरो
suppose this is earth, this is earth. suppose ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି, suppose desert ରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି, okay? तो ଏଇଠି ଆମେ ଅଟୋ ଉପରେ suppose ବସିଛେ, this is our eye, this is our eye. So generally you know मरुभूमि रे कोन थाए केवल बाली थाए आ बालीटा हो गोटे बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ योर हीट रेडिएशन. सो दिन बेले प्रचंड रौद्र ताप जोगो ओके सी कौन करे बाली कौन करे हीट को एब्जॉर्ब करे. इट्स सरफेस इज रफ सो इट इज ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट रेडिएशन. तो हीट जब एब्जॉर्ब हो जिवो तलर टेम्परेचर बहुत अधिका हो जिवो. टेम्परेचर बहुत अधिका हेले एयर लाइट हो जिवो. लाइट हे कि ऊर्ध्वगामी हबो ऊपर को चलिवो. तो तलटा हो जिवो हमर डेंसर मीडियम सॉरी रेयर मीडियम हो जिवो. कंपैरेटिवली डेंसनेस ता बड़ी बड़ी चलिवो. कंपैरेटिवली डेंसनेस ता बड़ी बड़ी चलिवो काहे ना एयर ता ऊपर को पळै जिवो जेहेतु तलटा हो जिवो रेयर मीडियम. पृथ्वी रो सरफेस पाका पाकी रेयर मीडियम रहइबो. धीरे धीरे जते ऊपर को जिबा डेंसनेस ता बड़ी 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 चलिवो. ताहले जदी आमे देखो डायरेक्टली गोटे रे एठू आसी कि तो हम आखिरे पडुचे हम गछ को देखि परुचे ठिया हिची. तापरे तो रे आसीबो एम तळ को आसीबो रे आ गोटे रे मनकर एपट चलीला तो कोड जाउछ देखो डेंसर ऊपर अछि डेंसर तळे रेयर. तो डेंसर रो रेयर को जाउची देखो क्रिटिकल एंगल देखो ए टिके डेविएट करिवो नॉर्मल टू. एठी देखो आउ टिके नॉर्मल टू डेविएट करिवो. एठी टिके आउ टिके नॉर्मल टू डेविएट करिवो. एंत डेविएट करी देबे क्रिटिकल एंगल रे पहुंचीबो. तापर कोन हबो ना क्रिटिकल एंगल टू आउरी अधिक आइजबो. एंगल ऑफ इंसिडेंस ता क्रिटिकल एंगल टू आउरी अधिक आइजबो. धीरे धीरे देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस ता बड़ी जाउची. बड़ी गोटे क्रिटिकल एंगल टू जब अधिक आइजबो सेति के बेले रेटा लाइक दिस एमती आसी कि क्रिटिकल एंगल टू जब अधिक आइजबो एंगल ऑफ इंसिडेंस ता टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो रे आसी कि हमर आखिरे एमती पड़िबो. तो हमको फील हबो एज इफ लाइट is coming from this. देखो ए लाइट रे ता एपट आसिला परिका लागुनी. दिस इज द इंसिडेंट रे किंतु दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे. ए रिफ्लेक्टेड रे ता कोठु आसिला परिका लागुची. देखो एपट कोठु गोटे आसिला परिका लागुची. सो योर ट्री विल बी appear like this. मु गोटे पॉइंट रो तुमको डायग्राम टाणी के देखैली गोटे पॉइंट रो नेली एमती ट्री रो प्रत्येक पोर्शन रो एमती एई फेनोमेनन ता घटिबो. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन घटिबो. तो प्रत्येक पोर्शन रो लाइट आसी के हमर कोन परिबो आखी ऊपर पड़िबो. तो एई जो ऑब्जेक्ट रो एई जो ट्री रो पूरा उल्टा इमेज ता इन्वर्टेड इमेज ता फॉर्मेशन हबो. आ हमर जेतु पवन पूरा पूरी बहुत थिबो तो ए जो डेंसनेस ता फ्लक्चुएट करथिबो. पूरा डेंसिटी ता हमर फ्लक्चुएट करथिबो. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मध्य प्रत्येक जगह रे फ्लक्चुएट करबा जोगु ए रे गुडा कोन होतिबो फ्लक्चुएट करथिबो. एम होतिबो. ताले ए जो गछटा सीधा थाई पारे किंतु तार जो इमेज रो देखा जाउची इमेज ता पूरा पूरी एमती होतिबो. सते जेमिति के पानी भितरे प्रति छवि जेमिति पूरा पूरी पानी जदि हमर चहलुथिबो जेमिति गछटा हमर इमेज ता केमिति चहले हमर कि नै फ्लक्चुएट करे सेमिति ये चहलुथिबो. तो गोटे हम भितरे गोटे इल्यूजन सृष्टि हबो. गोटे से इल्यूजन जो सृष्टि हबो से इल्यूजन कोन ना सते जेमिति के पानी अछि परिका लागिबो हमको. तो जते बेले हमें तो तुषार तो ही थिबा हमें पूरा सोसिला ही थिबा हमें थर्स्ट ही थिबा. तो दूर रो हमें दौड़ीबा पूरा पूरी सेठी हमर पानी अछि बोली दौड़ीला बेला को बिल्कुल किछि नथिबो. दिस इज जस्ट एन इल्यूजन. जस्ट माने ए जो घटना घटुची कहा जोगो ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जोगो घटुची. किंतु पाखो को गला बेला को केवल गछ थिबो तार इमेज बिल्कुल नथिबो कि पानी बिल्कुल नथिबो. सो एई घटनाटा हमर जस्ट रिवर्स केस ता हबो हमर कोठी लूमिंग बुलिया को एटा हो हमर मिरेज आर उल्टा जिनसटा हबो लूमिंग. एटा देखो केमति देखा जाउची सेठी आकाश रे गोटे जिनस दिबो. जदी गोटे सरफेस ऊपर कोन गोटे अछि सरफेस ऊपर माने बरफ ऊपर जदी गोटे मानकर स्लेज गाड़ी थिबो से स्लेज गाड़ी आकाश को तो चाहिबो स्लेज गाड़ीटा आकाश रे चली थिबो कुकुर माने ताको टाणु थिबे. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फेनोमेनन. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जोगु ही घटे. ओके आ हमर डायमंड भी हमर बहुत ग्लेज करे कोन पई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जोगु ही करे काहे कि ना हमर डायमंड रो absolute refractive index, that means refractive index of a diamond with respect to air is approximately your 2.5
2.5 तेणुक यार करस्पॉन्डिंग क्रिटिकल एंगल टा एप्रोक्सीमेटली हमरो 24 डिग्री बोली धरी निया जाए एप्रोक्सीमेटली 24 डिग्री यू सी ग्लास एयर रो कॉम्बिनेशन 42 थिला ग्लास वाटर रो कॉम्बिनेशन रे 63 थिला वाटर आउ एयर रो कॉम्बिनेशन रे 49 थिला बट यू सी दिस क्रिटिकल एंगल इज वेरी स्मॉल क्रिटिकल एंगल इज वेरी स्मॉल माने कम क्रिटिकल एंगल रे माने 24 डिग्री टू जदी एंगल ऑफ इंसिडेंस अधिका हो गला ताले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हबो इठी ताले हमरो कोन करा हबो डायमंड को एम्प्टी कटिंग करा हबो एक्चुअली डायमंड कटिंग होच इंपोर्टेंट ताको कटिंग एम्प्टी करा जिवो जे जतबे रे भितरे पसिबो कंटीन्यूअसली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से भितरे हबो तापरे जो पटे सेटा पदा को बाहरिबो पूरा पूरी हमको ग्लेज करिबो पूरा ओके सो दिस इज द रीजन क्रिटिकल एंगल तार बहुत कम आउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत अधिका हेतिबा जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोले हमें जस्ट डिस्कशन करिथिले जार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिका तार क्रिटिकल एंगल मध्य कम हबो क्लियर ऑल ऑफ यू सो या ऊपर हमें डिस्कशन करिथिले सो आर बहुत भी आउरी हमर ऑप्टिकल फाइबर रे मध्य ऑप्टिकल फाइबर देखो गोटे कांसेप्ट ऑप्टिकल फाइबर रे हमरा प्रेजेंट डे रे मॉडर्न डे रे हमें कौन करूछु हमरा जो सिग्नल को ऑप्टिकल फाइबर रे हमें ट्रांसमिट करूछु ऑप्टिकल फाइबर टा गोटे एमती तयारी हेतिबो आ भितरे दिस इज ऑप्टिकल फाइबर सो ऑप्टिकल फाइबर रे गोटे कोर थाए जाको क्लडिंग बोली कोआ जाए आ गोटे तार सरफेस थिबो एमती थिबो एटा तार क्रॉस सेक्शन टा ओके ताले जतबेले लाइट भितर पास करिवो देखो यू सी आपको मु टिके देखौ जे एठी सो लाइट जतबेले भितर आसी कि पसिबो तो देखो एटा हो डेंसर मीडियम टा बाहर टा हो रेरर मीडियम टा तो डेंसर रो जतबेले लाइट टा रेरर आड को जाउथिबो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हबो पुनी देखो डेंसर रो रेरर आड को जाउची क्रिटिकल एंगल टा जदी अधिका हे गला आउथरे पुनी रिफ्लेक्शन हबो एटा ला नॉर्मल पुनी होते एटा क्रिटिकल एंगल तो अधिका पुनी रिफ्लेक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हे पूरा पूरी देयर इज नो लॉस ऑफ एनी एनर्जी पूरा हे कि हमर हजार हजार माइल दूरता को हमर सिग्नल को हमें ट्रांसमिट करि परिबा सो मॉडर्न डे रे हमें टेलीकम्युनिकेशन जो जहां भी होउची हमें ऑप्टिकल फाइबर रे हमें पठौचे दैट टू ए भीतर देखो केते गुडा ऑप्टिकल फाइबर सब ए भीतर अछि गोटे केबल भीतर तो देयर इज नो इंटरफेरेंस जदी देखो एठी आउ गोटे मन कर थिबो एठी देखो एठी मध्ये सिग्नल गोटे छाडीबा देखो ए सिग्नल ए भीतर चलीबो देखो यार सिग्नल सहित यार सिग्नल कौन सी इंटरफेरेंस नहीं तेणुक डिस्टॉर्शन बिल्कुल रही ओके सो एक्जाक्टली पूरा जहां हमें इनफॉरमेशन पठेबा जहां सिग्नल पठेबा हमारा लक्ष्य स्थल रे जाई पहुंचबो तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर रो कांसेप्ट मध्य आज मॉडर्न डेज रे हमें व्यवहार करूचे माने साइमल्टेनियसली 300 400 हमें सिग्नल को विदाउट एनी इंटरफेरेंस हमें पठेई परिबा किंतु जेतेबेले हमें इलेक्ट्रिकल वायर व्यवहार करूथिले कंडक्टर व्यवहार करूथिले सेतिक बेले हमर केवल गोटिए वायर रे गोटिए सिग्नल को हम पठेई परथिले किंतु गोटिए केबल रे हमें 300 रु ऊर्ध्व 400 रु ऊर्ध्व मध्ये हमें सिग्नल को ट्रांसमिट करि परिबा विदाउट एनी इंटरफेरेंस ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस आल्सो सो वीडियो बहुत लंबा हो गलानी थैंक यू ऑल बाय